Assalamu alaikum. Welcome to 8 English Academy 110. Here the instructor Hassan Ali. So guys, the topic is the sentence, parts of sentence and types of sentences. So let's start with this one. Now, what is sentence? A sentence is a group or combination of words that map sense. Is known as the sentence. अब वर्ड्स का हमारे पास कोई ग्रुप या कॉम्बिनेशन हो तो वो हमें क्या देता है, सेंटेंस देता है. नाउ देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. Ahmad is going to Karachi. Now this is a sentence just because there is the word Ahmad is going to Karachi. Now there is the combination of words and it eventually makes sense, and that's why it's known as the sentence. Now there are so many sentences which are waiting for a call. They are the captives. वो जंग के जो हैं कैदी हैं. And Aslam is an engineer. Aslam हमारे पास एक इंजीनियर है. And there is another sentence, go and bring it. Now this is also known as the sentence. So these are the group of the sentences. अब हमारे पास sentences का एक group बन रहा है, सही है. So after the sentence, now there is another sentence, please pass me the chair. Now after the sentence, there are parts of a sentence. If we are talking about one sentence or only a single sentence, so if we are talking about the single sentence, then there are parts of a sentence. अब एक sentence के हमारे पास दो parts होते हैं. Now एक sentence के हमारे पास दो parts हैं. One is subject and second one is the predicate. Here over the screen it's shown. Now what is the subject? अगर देखा जाए तो subject हमारे पास क्या बनता है? Then subject is a doer or performer of an action is known as the subject. कोई काम करने वाला कोई बंदा कोई काम करने वाला हो तो वो एक्शन करने वाला बंदा हमारे पास क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है. डजंट मैटर इट इज अ पर्सन, इट इज और नॉट अ पर्सन और नॉन लिविंग. सो देयर आर सेंटेंसेस. अहमद इज वेटिंग हियर. अब अहमद क्या कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है इधर. नाउ अहमद इज कंसिडर्ड एज द subject. Red underline word Ahmad is known as the subject. They are purchasing clothes from market. Now in this sentence they are considered as the subject. So now sometimes a subject expresses state or existence. अब subject हमारे पास सिर्फ ये नहीं कि भाई वो बंदा कोई काम करे. Sometimes it also expresses the sense of state or existence. In some sentences there is no any main verb. That's why subject sometimes expresses the sense of state or existence. Now there are sentences. He is an engineer. In this sentence there is no any action verb, like in this sentence wait, purchase. Now in this sentence there is no any action or main verb. That's why action verb. That's why here he is considered as the subject and the sentence whole sense gives the sense of state. Or she is in the classroom. Now she is considered as the subject for this sentence. Now if we look for the other part of the sentence, except subject, the other part is known as the predicate. Now what is the predicate? Except subject, the rare part is predicate. अब subject के अलावा जो हमारे पास rare part बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, predicate बनता है. So guys, examples of predicate: Alia was washing clothes. If we are neglecting Alia, अगर आलिया को छोड़ दें तो सेंटेंस का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारे पास क्या बनता है, predicate. So red underline word is group of words is considered as the predicate. Rahman is in the panel. Rahman पैनल में है. पैनल मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सनैलिटीज होता है. कोई मतलब जो स्पीचेस वगैरह दे या कोई रोस्टिंग वगैरह करे या ऐसा कुछ, या कोई वाइवाज वगैरह लें तो पैनल से बोलते हैं. Rahman is in the panel. अब इन द पैनल हमारे पास क्या बनता है, ये प्रेडिकेट है. नाउ देयर इज अ नोट for predicate also. In predicate there can be verb, object, prepositional phrases और adverbial. अब predicate में हमारे पास वर्ब भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को आप कभी कभी एडवर्बियल भी बोल सकते हैं. तो वे भी हमारे पास किसी सेंटेंस में है. नाउ देयर इज अ सेंटेंस, अहमद इज ड्रिंकिंग वाटर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, देन इन दिस सेंटेंस अहमद इज कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट, इज ड्रिंकिंग is considered as the verb for this sentence, water is known as the object, and in the school is known as the prepositional phrase, or you can call it the adverbial. So these are the strategies of parts of a sentence. Now sentence is also divided into the types. अब sentence हमारे पास जो है वो types में भी होता है. So if I am talking about a sentence, then there are the parts of sentence. But if I am talking about sentences, then there can be types of sentences. So sentences के हमारे पास अब 4 एग्जाम होते हैं normally: assertive or declarative sentence, interrogative sentences, imperative sentences or exclamatory sentences. So from the very basic criteria, let's initiate with the
assertive और declarative सेंटेंस है, और आप इसे assertive, declarative या कभी कभार कई बुक्स में आपके पास जो पढ़ा होता है affirmative सेंटेंस भी होता है. Now what is an assertive sentence? Assertive sentence is a sentence that sometimes express positive sentence or sometimes express negative sentences or sometimes positive or negative senses or expressions. ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें या तो आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो, एंड दैट्स नोन एज द असर्टिव सेंटेंस. जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट के हिसाब से लेके चले हम, देन दोज असर्टिव सेंटेंसेस दैट स्टेट और असर्ट स्टेट, जो सीधी सीधी बात कर लें, वो क्या हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस है. जैसे हमारे पास एग्जांपल से अनाया ड्राइव अ कार, अब अनाया एक गाड़ी चला रही है. दे आर स्लॉटरिंग द एनिमल एंड आई एम वर्किंग हेयर. तो ये हमारे पास सीधे सीधे सेंटेंसेस जब आ जाएं तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस बनते हैं. मगर असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो पॉजिटिव हो. सही है. नाउ देयर इज अनदर स्ट्रेटजी ऑफ द असर्टिव सेंटेंस व्हिच इज नोन एज द नेगेटिव सेंटेंसेस. व्हिच आर द नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्या बनते हैं. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दो नेगेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो द असर्टिव सेंटेंसेस बट इट asserts or state something else with the implementation of the word not. अब इनमें क्या वर्ड आता है हमारे पास, not आ जाता है. तो देखें ज़रा सेंटेंस, अनाया डज नॉट ड्राइव अ कार, उधर क्या था, ड्राइव्स अ कार, एंड हेयर इट इज डज नॉट. द अदर सेंटेंस, दे वर नॉट स्लॉटरिंग द एनिमल, हेयर द सेंटेंस इज was, they were slaughtering animal, here they were not slaughtering animal. The other sentence, I'm not working. Now here the implementation of the word not or the addition of the word not expresses the sense of the assertive but assertive negative sentence. So this is the assertive sentence. Now there are the other type of sentence, other type of the sentences are the interrogative sentences, or you can see the interrogative sentences. Now interrogative sentences are the sentences that are used to ask something or arise questions. जो सवाल पूछने के काम है वो हमारे पास क्या बनते हैं, interrogative sentences. Now there are the examples, are you coming up, what are you doing, and have you eaten meal, haven't you. Now in the last of the sentence there is a question mark. Question mark is the necessary thing in the last of the sentence, in the last of the interrogative sentences. Now if we are talking about the questions arising something else, then there are three strategies or three types of the questions. अब questions के हमारे पास तीन जो होते हैं, मतलब strategies होती हैं. plain questions, WH and tag. Now what are the plain questions? ऐसे सवाल जो helping verb से शुरू हो, जैसे इधर have हुआ, have you done with your assignment, तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, plain questions. जैसे have you done with your assignment, or had she gone for a study tour. Now in sentences के सामने helping verb आए, and in the last there is the question mark. तो ये हमारे पास interrogative sentence है, मगर ये कौन से सवाल है हमारे पास, plain questions है. Now what are the WH questions? अब WH questions ऐसे हैं जिनके सामने हमारे पास WH word आ जाए. अब WH word हमारे पास कौन से होते हैं, what, who, which, where, and sometimes how is also known as the WH word. So what पहले आ गया, and in the last there is a question mark. It means the sentence is the interrogative sentence and this question is considered as the WH question. Now how are you eating, in the last of the sentence there is a question mark, but in the front of the sentence, in the initial beginning of the sentence there is how word which is known as the WH. That's why it's known as the WH question. Now take questions. अब take questions हमारे पास ऐसे सवाल होते हैं जिनमें आप either you give answer yes or no. Now here the sentence, I am confused or not I. अब क्या मैं परेशान हूँ और not I, या मैं नहीं. Now here an other complicated thing is that अब इधर I के साथ हमने am इस्तेमाल किया, and here we have used the word or not. So guys, there is no contraction form of the am word, likewise the contraction form of the r. अब r का हमारे पास इधर contraction form है. Contraction form means आपको ये apostrophe देख के कोई अल्फाज कोई जो उधर से लेटर घूम कर ले तो उसे हम contraction form कहते हैं. So there is no contraction form of the word am. That's why it's possible for you to use the contraction form of the word contraction form or not with the word I. अब I के साथ contraction form or not इस्तेमाल कर सकते हैं. So now from the previous sentence we have got a sentence, am I confused or not I. The answer must be yes or no. That's why it's known as the tag question. सही है. Now there are other sentences, had you done with your homework, hadn't you. क्या आपने अपना homework कर लिया, क्या नहीं किया, क्या आपने अपना homework किया था कि नहीं किया था, yes or no answer. So these are the strategies of the questions, plain, WH and take questions, and this is these are the interrogative sentences.
Now there is the other type of sentence is imperative sentence, or you can say the imperative sentences. अब imperative sentence हमारे पास ऐसे sentence होते हैं जिनमें request, order, prohibition, suggestion और advice हो. Those expresses the request, order, prohibition, suggestion or advice are known as the imperative sentences. जैसे get out, stand up, speak slowly, please give me a book. अब from these sentences, if you got a sense that someone is requesting you, someone is ordering you, someone is prohibiting or forbidding you from something else, or someone is suggesting something else you, or someone is going to give you advice, then those sentences are known as the imperative sentences. Now, from the very basic criteria, imperative sentence express the sense of request. One by one, from the strategical level, we'll discuss each of the strategies that are mentioned in the definition. Now please give me water, some water, please pass me that chair, could you please make an assignment for me, and please operate my computer. Now from all the sentences we've got a sense that the sentences are in the soft or the smooth voice, or sentences from the sentence we've got a sense of the request. That's why the sentences are considered as the imperative sentences, and these imperative sentences express the sense of request. Now there is other strategy is order. Get out, sit down, go and water the horse, speak English in the class and keep silence here. Now these are the imperative sentences but expresses the sense of order, because in these sentences there is no any softness. The person who is ordering you is the person who bound you to do something else, whatever he is causing you to do that one. अब ऐसा बंदा जो कोई आपसे कोई काम करवाए तो वो आपको ऑर्डर देता है और आपने वो करना पड़ता है, तो वो जो सेंटेंस इस्तेमाल करता है, द सेंटेंस इज बीइंग यूज्ड आर नॉट एज द इंपेरेटिव सेंटेंसेस. नाउ प्रोहिबिशन. अब प्रोहिबिशन भी हमारे पास क्या बनती है, ऑर्डर बनती है, मगर ये एक ऐसा ऑर्डर है जो हमें कोई काम ना करने पे मजबूर कर देती है. इट मीन्स समवन बाउंड अस नॉट टू डू समथिंग एल्स. सो डोंट प्लक फ्लावर, डोंट स्क्रैच बेंचेस, डोंट ट्राई टेक्स्ट मी राइट नाउ, डोंट गो आउटसाइड ड्यूरिंग लॉकडाउन. अब ये हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोहिबिशन, जिनमें आप किसी बंदे को कोई हुक्म दें कोई चीज़ ना करने के लिए. मीन्स यू आर प्रोहिबिटिंग, यू आर फॉरबिडिंग और यू आर प्रिवेंटिंग समवन एल्स फ्रॉम डूइंग समथिंग एल्स. किसी बंदे को कोई चीज़ ना करने पे हम मजबूर कर दें तो वो हमारे पास क्या बनता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है, मगर वो सेंस क्या बनता है, प्रोहिबिशन बनता है. नाउ देयर इज सजेशन. अगर कोई बंदा आपको फ्री में कोई सलाह दे, देन दैट्स नोन एज द सजेशन. और आपको कोई फ्री में सलाह दे या आप वो सलाह लें चाहे ना लें, इट्स योर कंसर्न एंड दैट्स नॉट एज द सजेशन. जैसे यू शुड इन्वेस्ट मनी इन ट्रेडिंग. आपको ट्रेडिंग में पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहिए. अब आप करें ना करें ये आपकी मर्जी है. यू शुड परफॉर्म स्पीचेज इन फ्रंट ऑफ द ह्यूज ऑडियंस. अब बड़ी ऑडियंस के सामने इसने स्पीचेज देनी है कि नहीं देनी है, अब ये इस पर निर्भर है. सो दैट्स नॉट एज द सजेशन. मतलब ऐसी चीज़ जो सिर्फ आपकी मर्जी से हो तो वो हमारे पास क्या बनती है, सजेशन. मगर दूसरे बंदे हमें सिर्फ उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए. अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप वो चीज़ करते हैं कि नहीं. नाउ एडवाइस. नाउ एडवाइस इज टोटली अ कंट्रास्ट ऑफ द सजेशन वर्ड. अब एडवाइस मीन्स वी आर बाउंड टू डू समथिंग एल्स एंड इट्स इन सॉफ्ट वर्डिंग्स. अब कोई सॉफ्ट वर्ड में हमें कोई चीज़ करने के लिए बोल रहा है, देन दैट्स नॉट द एडवाइस. नाउ ही मस्ट ऑफर पीरियड्स 5 times इन अ डे. इसे 5 वक्त नमाज़ पढ़नी चाहिए एक दिन में. अब पब्लिकली हम ये डिनाई नहीं कर सकते, पब्लिक के सामने हम ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैंने नमाज़ नहीं पढ़नी है या 5 वक्त नहीं पढ़नी है. सो एडवाइस कोई ऐसी चीज़ जो आप डिनाई ना कर सकें. और दे मस्ट रिस्पेक्ट पेरेंट्स. उन्हें पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी चाहिए. और शी मस्ट अप्लाई हिजाब. उसे हिजाब अप्लाई करना चाहिए. तो अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे पास मतलब एक फीलिंग्स के साथ, हमारे फीलिंग्स के साथ खेला जाता है. सो डजेंट मैटर अब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रोहिबिशन, सजेशन, एडवाइस हो किन सेंटेंसेस में, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे पास क्या बनते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं. नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ द सेंटेंस is exclamatory sentence, or you can call them exclamatory sentences. Those sentences that express strong emotions or excitement. ऐसे हमारे पास सेंटेंस है जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस मिले या जिसमें हम वंडर फील करें, स्ट्रेंज फील करें, वी गॉट एस्टोनिश्ड, एंड दो सेंटेंसेस आर कंसिडर्ड एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब जैसे exclamatory sentences often begins with words like what or how. Now this is a transition moment of the sentences. अब कोई ऐसे सेंटेंस जो what या how से शुरू हो
तो वो भी हमारे पास सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव बनते हैं। जैसे व्हाट वाला एक दो सेंटेंस हमारे पास इधर है, भाई व्हाट अ वंडरफुल डे, व्हाट अ वंडरफुल डे, क्या ही अजब का दिन है। नाउ इन द लास्ट ऑफ द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस देयर द एक्सक्लेमेशन मार्क, this sign over the screen is known as the exclamation mark, and the front in the beginning of the sentence there is the word what. Now what a fantastic surprise, in the last there is the exclamation mark and in the beginning there is the word what. अगर कोई सेंटेंस what या how से शुरू हो और in the last there is the exclamation mark, then those sentences are considered as the exclamatory sentences. अब जैसे how quickly time flies, now how सामने आ गया और in the last of the sentence there is the exclamation mark, then that's why it's known as the exclamatory sentence. How amazing that performance was, अब front में how है और in the last there is the exclamation mark, that's why it's known as the exclamatory sentences. So with this we have done with the sentence, parts of sentence and strategy, or I have to say types of the sentence. So with this, wa akhir dawana walhamdulillah. Thank you so much for today.